Dear students, Indu Sharma is presenting to you today the lesson Everest MERI SHIKHAR YATRA Part 2. According to the first part, Bachendri Pal did not have a very good childhood due to the financial condition of the family, but she still maintained her academic level and even under difficult circumstances. She got MA or B.Ed degree. Keeping this spirit in act, Bachendri Pal carried forward her steps to conquer Everest. Let us have in part 2 how she went ahead after facing of being the first woman, of being the difficulties, and got the distinction of being the first woman of India to set foot on Everest. As well as she remains a great inspiration for women today. Let us start the lesson Everest MERI SHIKHAR YATRA Bachendri Pal. 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। On Buddha Purnima, May 15-16, 1984, I was in Camp 3 of a beautifully colored nylon tent set up on the snowy straight slopes of Lahotse. कैंप में 10 और व्यक्ति थे। There were 10 more people in the camp. लोबसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। लोबसांग तशारिंग was in my tent. एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। Andy Sherpa and 8 other strong and tall Sherpas were in other tents. मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। I was in a deep sleep that at around 12:30 in the night, I suddenly woke up due to the impact of a hard object in the back of my head, and there was a loud bang as well. तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। That's when I felt a cold, very heavy thing running through my body, crushing me. I was also having difficulty in breathing. यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी।
What had happened? A long iceberg had broken off from the Lahotse glacier just above our camp and formed a huge iceberg. This giant of icebergs, snowflakes, and frozen snow coming down a steep slope with a high speed and roaring roar of an express train devastated our camp. In fact, everyone was hurt. It was a surprise that no one had died. लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरी चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। Lobsang was able to clear the way for us with the help of his Swiss knife and immediately rushed to save me. Even a little delay meant death. Hardly removing the huge snowflakes, they dug the hard frozen snow around me and were able to pull me out of the snow grave. सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे ले आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। By morning, all the security teams had arrived, and by 8 a.m. on May 16th, we had almost reached Camp 2. The Sherpa who had broken his leg was brought down on a stretcher made by himself. In the words of our leader, Colonel Khuller, it was a tremendous adventure of security work at such a height. सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? All the 9 male members had to be sent to the base camp due to the injuries or broken bones, etc. Then Colonel Khuller turned to me and said, "Were you scared?" जी हाँ, yes. क्या तुम वापस जाना चाहोगी? Would you like to go back? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। No, I replied without any hesitation. Explanation. Students, whenever we go out to fulfill any big purpose of our life, we have to face many difficulties with our courage. In the same way, Bachendri Pal had to face many terrible obstacles on the way for the goal that she had to set conquer Everest with her courage. Bachendri Pal faced very difficulties in which man sees death very closely. Even after facing dangerous forms like iceberg of mountains, Bachendri Pal Ji's spirit did not waver and instead she focused her mind more to fulfill her goal. Strengthened. See students,
Icebergs. The meaning of icebergs is mountain of ice. Ice formed by fresh and pure water, pure sweet water. The nice fact is that the mountain of ice is much bigger than it seems. 90% of the size is below the surface and only 10% of it is visible above the sea when floating and moving away from the glacier. जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। As soon as I reached South Cole Camp, I started preparing for my important climbing for the next day. I collected food, cooking gas, and some oxygen cylinders. When Bisa came at 1:30 p.m. in the afternoon, he saw me heating water for tea. That Jay and Meenu were still far behind. I was worried as I had to climb with them the next day. They were coming slowly as they were carrying heavy loads and walking without oxygen. दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी बहुत कुछ पीछे थे। मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। Later in the afternoon, I decided to go downstairs to help the other members of my team and fill one of my thermos with juice and the other with hot tea. I stepped out of the tent in the icy wind. As I was coming out of the camp area, I met Minu. Key and Jay were still a little behind. I found Jay just below the top of the Geneva spur. He gratefully drank tea and so on, but tried to stop me from going any further. But I also wanted to meet Key. After descending a little further, I saw the Key. He was stunned to see me. तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? Why did you take such a big risk, बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? I told her firmly, I am a climber, like everyone else. That's why I came to this group. I am fine physically, so why shouldn't I help my team members? He laughed and quenched my thirst with a drink. की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। He laughed and quenched my thirst with a drink. लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। But he wouldn't let me take my kit.
थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। After a while, Lahatu and Besa came down from the South Col camp to meet us, and we all returned to South Col with whatever safety and comfort was available. South Col is famous as the harshest place of the earth. अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। The next day I got up at 4 in the morning. I melted the ice and made tea. After having a light snack of some biscuit and a half chocolate, I left my tent at about 5:30 a.m. Angdodi was standing outside and no one was around. अंगदौर बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। Angdorji was about to climb without oxygen, but because of his feet became cold. That's why he did not want to go to the summit camp in the open for a long time at high altitude. So he had to either climb to the top of the same day and return to the South Pole or give up his attempt. वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। He wanted to start climbing right away and he asked me would I like to go with him. It will be very difficult and laborious to go from South Col to Peak and back in a single day. Apart from this, इसके अलावा यदि अंगदौर के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। Apart from this, if Angdorji's feet became cold, there was a risk of him coming back. I still had faith in Angdorji, and at the same time, I was convinced of Arohan's ability and diligence. Arohi means the mountaineering equipments, ability and diligence. No one else was ready to go to along at this time. सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर से काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई।
When Ang Dorji and I came out of South Cole at 6:20 a.m., the day had risen. A light breeze was blowing, but it was also very cold. I was quite safe and warm in my ascending equipment. We climbed with a rope. We climbed without a rope. Ang Dorji climbed up at a certain speed, and I too did not find any difficulty in walking with him. जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। The steep and sloping cliff of frozen ice was so hard and variable as to be covered with sheets of glass. We had to use a snow shovel, and I had to shovel hard enough to cut the frozen ground with the shovel's teeth. I took every step carefully in those dangerous places. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। We reached the summit camp in less than 2 hours. Angdor ji looked back and asked me if I was tired. मैंने जवाब दिया नहीं। I replied no. जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। Hearing this, he was very surprised and happy. उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। He said that the earlier team had taken 4 hours to reach the summit camp और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। He said that the earlier team had taken 4 hours to reach the summit camp, and if we keep going at this speed, we will reach the summit at 1 o'clock in the afternoon. Say students, Ang Dorji Sherpa. Who was Ang Dorji? Ang Dorji Sherpa, born 1970, is a Nepali Sherpa mountaineering guide, climber and porter from Pangbuche, Nepal, who was climbed to the summit of Mount Everest 21 times. He was climbing Sridhar from Rob Hall's Adventure Consultants expedition to Everest in spring 1996. When a freak storm led to the deaths of 8 climbers from several expeditions, considered one of the worst disasters in the history of Everest mountaineering. He grew up among Himalayan climbers. His father, Nima Tenzing Sherpa, was a climber with expedition led by British mountaineering Chris Bonington in the 1970s and 1980s. Angdorji Sherpa, he first guided Bachendri Pal, the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest in 1984 when he climbed Mount Everest for the second time without oxygen.
लाहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नॉलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। Latu was following us as we rested at the bottom of the southern summit. He reached us. After drinking some tea, we started climbing again. Latu had brought a nylon rope. So Angdorji and I climbed on the rope. Climbed with the support of the rope while Lahatu walked in the middle holding the rope with one hand. उसने अब रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। He was holding the rope for our balance instead of for his own protection. लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। Lahatu noted that I was climbing at a rate of about 2.5 liters of oxygen per minute compared to the 4 liters of oxygen normally required for these altitudes. मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। As he increased the oxygen supply on my regulator, I realized that even the flat and hard climbs seemed easier now. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। The wind speed had increased over the southern summit. At that height, gusts of strong wind were blowing fine snowflakes around, reducing visibility to zero. So many times that there is no high climb after only a short distance. The slope has gone straight down. मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। It was as if my breathing had stopped. I thought that success was very near. I was standing on the top of Everest on 23rd May 1984 at 1:07 p.m. I was the first woman to reach the summit of Everest. एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए
हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। There was not enough space on the top of the Everest cone to stand two people side by side, looking at the thousands of meters long straight slope all around. The question before us was of safety. We first stabilized ourselves safely by digging the snow with the snow shovel. इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। After this I got down on my knees, placing my forehead on the snow. I kissed the crown of सागर माथे। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। Without getting up, I took out Durga Ma's picture and Hanuman Chalisa from my bag. मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। I wrapped them in a red cloth that I brought with me. I did a little worship and buried them in the snow. In this moment of joy, I got my parents' attention. जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैंने अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आधार भाव से झुकी। As I got up, I folded my hands and bowed respectfully to Angdor ji, my rope leader. Angdor ji, who encouraged me, Angdor ji, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। Angdor ji, who encouraged me and made me reach my goal. ऑक्सीजन, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। And I also congratulate him on his second climb of Everest without oxygen. उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया। He hugged me and whispered in my ear, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। Sister, you climbed well. I am very glad. कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू किए। After some time, Sonam Pulzar reached there and he started taking photos. इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। By this time, Latu had informed our leader that the four of us were on Everest. तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया था। Then I was given a walkie talkie in my hand. कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। कर्नल खुल्लर was very pleased with our success. मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। He said, congratulate me. He said, I would like to congratulate your parents for this unique achievement of yours. वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। He said that the country is proud of you and now you will go back to the world that you have left behind would be completely different.
So, students, you have read in the end, Bachendri Pal has achieved her destination, or rather the goal, in the face of every difficulty, and keeping her spirit high. And finally, he reached her goal. She did not panic in any difficult situation. Along with her four companions, she scaled Everest and achieved the crown of being the first woman to climb Everest in India. The whole of India will always salute on her great victory and her strong intentions. So look, there are two pictures is here. One is Durga Ma and one is Hanuman Chalisa. According to Hindu religion, Durga Ma is worshipped and Hanuman Chalisa is recited to show our devotion towards Hanumanji. In Hinduism, it is believed that worshipping Durga Ma and reciting Hanuman Chalisa recitation not only fills our mind with confidence but also gives us strength to bear our sorrows. So, student, this is the part of the lesson part 2, lesson Everest, MERI SHIKHAR YATRA. Here is end of this part. I will present you the next lesson very soon. And if you like my explanation, which makes your lesson is easier, then please give me a like and then share my videos to your friends and subscribe me also. Thank you.